Okay, so I think all of you can see the whiteboard. Yes, sir. Okay, so combinational में हमने कहा कि combinational output depends upon the present input only, whereas in sequential circuits the output depends upon present input as well as the past output. Okay, so what are the examples? Okay, so the examples of this combinational circuit is multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder. Okay, so, and there are so many other examples are also like parity generator, parity checker, okay, priority encoder, okay. There are so many other examples like adders, subtractors. Okay, so these are the various examples of some converters. Okay, so these are the examples of combination circuits. And sequential circuits, we have the very basic thing for this sequential circuit is flip-flop. Okay, next you will have registers, counters. Okay, the basic unit for this sequential circuit is flip-flop. All of these things, registers and counters, will be made of this flip-flop. Okay, so we have to go through all these. So in the next class, I will discuss some sequential circuits. Today I will discuss the combinational circuit. So we have some more time, about 10 minutes. So let us go through multiplexer and demultiplexer. Okay. As the name suggests, multiplexer. I am just going through some basic idea only. Multiplexer, or in short, it is known as mux. Okay. And demultiplexer, in short, it is known as demux. Okay. So multiplexer kya hai? As the name suggests, multiplex means what? We will have multiple input and one output only. Okay, this is mux with some select lines. So these are the input. Here these are the select lines. And there is a relation between select line and input, that the number of select lines. Okay, so this is M, and here it is the number of input as N. So what we can see that N is equal to 2 to the power M. Are you getting that? So if we have 4 number of inputs, if N is equal to 4, then what is the value of M? Two. So how we can get that? We have to find out. So we have N is equal to 4 and M is equal to, so how we can write 4? We can write 4 as 2 to the power 2.
To the power 2. To the power m. So from comparison, we can see that m is equal to 2. Okay. 2. Now in the case when n is equal to 16, what will the value of m? 4. To the power 4. To the power 4. 4. 2 to the power 4 is equal to 2 to the power m. So m is equal to 4. 4. So there will be m select lines. So based upon the select lines, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इनपुट आउटपुट में आएगा. इज इट ओके? हम क्या डिसाइड करते हैं? बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट लाइन वी विल डिसाइड द whatever the output, whatever the input will be obtained in the output. Okay, so the examples of multiplexer are 2:1 multiplexer, 4:1 multiplexer. This is the way of representation of multiplexer. Okay, 8:1 multiplexer, 16:1 multiplexer. Okay, so basically up to 16:1 multiplexer is available in market. The IC is available. Next is 2:1 multiplexer. Okay, so these are the multiplexers which are available. These are the multiplexers which are available or we can design. So the larger multiplexer can be designed using the smaller multiplexers. Okay, what I have said that the larger multiplexers or larger version of multiplexers can be obtained using the smaller version of multiplexers. So if we have a 4:1 multiplexer, let us draw that. We have a 4:1 multiplexer. So we will have 4 inputs, 1, 2, 3, and 4. Okay, and we have one output only. So here we will have, let the 4 inputs are I0, I1, I2, I3. So what should be the select lines? How many select lines should be there? 2. Sir, 2. 2. And the select lines will be named as S1, S0, S1. and S0. Okay, so we have 2 inputs, 2 select lines, and 1 output. Okay, this is a 4:1 mux. Now, based upon the combination of select line, which information has to be at the output, it will be obtained using these select lines. तो हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन है, I0, I1, I2 और I3. इन 4 इंफॉर्मेशंस में से कौन सा इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट में मिलेगा, that is dependent upon the combination of select lines. So at select lines we have 2 inputs. So how many combinations will be there? We have the select lines as S0 and S1, and the output we have to obtain. So how we can get that? So we have so we have 2 variables, so S1 and S0. So how many combinations will be there? 4 combinations. 4 combinations. So 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay. So now this is up to the designer that for which combination, which output should be there. So I am assuming that when S0 and S1 has the combination of 0, 0, at output we will get I0 only. Okay. Are you getting that? Yes, sir. Yes, sir. If I am telling, Yes, sir. so it is up to the designer. ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा आउटपुट चाहिए, ये डिजाइनर के ऊपर डिपेंडेंट है फुल्ली. So now for the combination for S1 and S0, for 0, 1, I am taking the output as I1. For the next combination, taking the output as I2, and for the next combination the output will be I3. Okay, so now the output will be given by the equation or the combination as, so whatever equation we will write it in SOP form.
Okay. So for the combination of S1 and S0, so what we can write here for S1 and S0, what we can write here, because the value of S1 is 0 and S0 is also 0. So we can write it as S1 bar, S0 bar. And for this combination, what is the output we want? We want the output as I0. Okay. Plus next combination, S1 as 0 and S0 as 1. S1 as 0. So it should be S1 bar, S0, I0, I1. Plus for the next combination, S1 as 1. So we should the equation should be S1, S0 bar, I2. And plus last combination is S1, S0, I. S1, S0, I3. Okay. So we have these particular combinations. Based upon that, we can get the circuit. So how we can get the circuit? So we have, as you can see here, that this combination is nothing but, this particular combination is nothing but the AND operation. Okay, S1 bar, S0 bar, I0, and here we have a OR. Okay, so based upon the combination, we are taking some result as, so as we have two inputs are there, that is two input combinations, that is S1 and S0. So I am taking two lines, one for S1 and second for S0. Okay, and we also have S1 bar and S0 bar. So I am taking the line as S1 and S0. Also in the equation, you can see that there is S1 bar and S0 bar also. So how we can get that? We can take a NOT gate and make a line from that. From here, we can also take a NOT gate and take a line from that. So the lines can be drawn as this. Okay, so the red line is for S1 bar and the second red line is for S0 bar. Okay, now what you have to do, we have to take the inputs. So S1 for the first combination, we have S1 bar, S0 bar. So from where we can take S1 bar and S0 bar. And the third input is for I0. And we can take an AND gate. And it. Okay. Next combination is S1 bar, S0. So S1 bar is here. Let me change the color. S1 bar is here. And S0. And here the input should be, the information should be I1. Again, we will have the next combination as S1, S0 bar. S1, S0 bar. So from here, the third input for I2. Next, we have S1, S0. So we have S1, S0, and I3. Okay, so here we will have the AND gates. Now, these AND operations are connected with OR operation. Okay, so here we will have one OR gate. Okay, so this is the output. Now, take the values of S1 and S0 and you can check whether at the output what you are getting. So let us take some arbitrary value of S1 and S0 as
let us take S1 as 0 and S0 as 1. Okay, so this is the gate number 1, gate number 2, gate number 3, and gate number 4. This is the gate number 5. So please tell me the value of output of gate number 1. I not, sir. So how? Let us check it. So here यहाँ S1 हमने 0 लिया है, तो S1 बार का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 0 ये 1 होगा। अच्छा 0 लिखा 1 होगा। S1 का वैल्यू हमने 0 लिया है, तो S1 बार का वैल्यू यहाँ 1 आएगा। लेट अस चेंज द कलर, ये 1 आएगा। नेक्स्ट S1 का वैल्यू, S0 का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा? 0 आएगा। ये कौन सा गेट है हमने डाला है, यहाँ पर लगाया है? एंड गेट। एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। 0। यस, तो एंड गेट में हम एक भी इनपुट अगर 0 आ गया तो हमें नेक्स्ट इनपुट चेक करने की जरूरत नहीं है। एक इनपुट अगर 0 आ गया तो आउटपुट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट गेट नंबर 2 के लिए S1 का वैल्यू 0 है। अगर S1 का वैल्यू 0 है तो गेट 2 का पहला आउटपुट क्या होगा? 1। सेकंड इनपुट क्या होगा? S1 1 है। 0 S1 है सर। S1 1 है 1 तो ये 1 होगा। और यहाँ पर I1 क्या है? I1 है, ये I1 है। I1। तो यहाँ पर 1 1 और I1 का जोड़ करेंगे तो हमें इनपुट क्या मिलेगा? I1 होगा सर। आउटपुट यहाँ हमें I1 मिलेगा। गेट नंबर 3 के लिए देखें, S1 0 है तो यहाँ क्या आएगा? 0। भाई इसका वैल्यू 0 हो गया आउटपुट में, और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। गेट नंबर 4 के लिए 0। यहाँ 0 आएगा, इसका मतलब गेट 4 का भी आउटपुट क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर सभी को और करें तो क्या होगा? यहाँ पर जो इनपुट और करेंगे तो 0 प्लस I1 प्लस 0 आउटपुट हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर I1 मिलेगा। कि हमने 4 इनपुट लिया था, 4 टाइप के इंफॉर्मेशन लिए थे, बट बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड S0 वी आर गेटिंग ओनली I1 एट द आउटपुट। आप यहाँ पर ट्रूथ टेबल में चेक करो कि 0 और 1 के लिए क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास। I1 ही आ रहा है। सो इस तरीके से क्या हुआ? वी हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशंस एट द इनपुट, बट वी आर गेटिंग ओनली वन इंफॉर्मेशन एट द आउटपुट। So that output is whatever we are getting is dependent upon the combination of select lines. ठीक है, तो select lines का जो combination हम देते हैं, based upon that हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिलता है, आउटपुट पे एक ही इंफॉर्मेशन मिलता है आउटपुट पे। ओके, so this is the thing which we have to see. Am I audible? Yes sir. So this is all about, this is the multiplexer. So हमने एक मल्टीप्लेक्सर देख लिया। अब ये सारे के सारे जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं सभी को बनाने के ही सेम ही तरीका है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को जब हम बनाते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट को हम बनाते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? ट्रूथ टेबल बनाना। किसी भी सर्किट को जब हम बनाते हैं तो हमारा पहला प्रोसेस जो चाहिए होता है वो होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो हमारे पास होता है, सो आफ्टर दैट फ्रॉम द ट्रूथ टेबल वी कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन बाय यूजिंग सम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स लाइक के मैप। सो यहाँ पर के मैप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है चारों अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 अलग अलग आउटपुट्स हैं। सो इसीलिए यहाँ पर हमने के मैप का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन को सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेप्स होगा किसी भी सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, उसमें सबसे पहला स्टेप हमें करना होगा क्या? फाइंडिंग द ट्रूथ टेबल। सो व्हाट इज ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल एक रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म में। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सारे पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक टेबुलर फॉर्म में एक तरीका है, दैट इज नोन एज द ट्रूथ टेबल। ठीक है, क्योंकि ट्रूथ टेबल में हमने क्या किया?
ट्रूथ टेबल में हमने उन सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया जो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म आफ्टर विच getting the expression in simplified form। तो simplified form में हमें एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? तो by using some simplification techniques, और जब हमें simplified expression मिलता है then we can realize using gates, logic gates, okay। so ये जो स्टेप्स है ये आइदर वो कॉम्बिनेशनल सर्किट हो या सीक्वेंशियल सर्किट हो, सभी में ये जो प्रोसेस है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि जेन्युइनली हर एक सर्किट डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, होगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जो भी आइदर यूट्यूब को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं, go through Yes, sir. yes, go through the YouTube channel and you will get the videos over there, and within the video if you will find any difficulty you can text me, okay, you can contact me। so Okay, sir. आज के लिए इतना ही रखते हैं। in the next class we will see some basics of the sequential circuits, okay। Okay, sir. Let me Thank you, show sir. you. Let me show you the syllabus. Let me show you the syllabus. So okay, so this is the syllabus of digital electronics. The Boolean function minimizing, then the combination circuits. You can see here. You can see here. Yes, sir. Some of you are asking about the examples of combinational and sequential circuits. You can get it from here. So you can see that. These are the examples of combination circuits: binary, parallel, adder, BCD adder, multipliers, code converters, parity generators, comparators, decoder, BCD to 7-segment decoder, encoder, priority encoder, multiplexer, demultiplexer. Okay, so these all are examples of combination circuits. Yes, Then we have the sequential circuits. So in sequential circuits, we have to go through some various types of flip-flops like D flip-flop, JK flip-flop, RS, T, D. Okay, so all of these things you have to go through. Then master slave flip-flop, interconversion of different types of flip-flops. So we have not this much of time to complete all these things. So in regular class, which will go on from the next Monday, we will see these things. So, but in the next class, we will just give you some basic idea about the sequential circuits or the flip-flops. Okay. सर Yes, sir. ये मॉड्यूल 2 में क्वीन मैक्लस्की मेथड नहीं हुआ। क्या क्या? मॉड्यूल 2 में क्वीन मैक्लस्की मेथड जो है ना सर, हाँ वो नहीं हुआ है। हाँ, हुआ तो बहुत कुछ नहीं है क्योंकि ये 4 क्लास में पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ से किया जाए। That is why I am telling you to go through the YouTube videos, whatever I have uploaded over there. Are you getting that? ओके Yes, sir. तो आप उन वीडियोस को देखें, आपको वहां पर सारा कुछ मिलेगा। मैंने चैनल का लिंक आप लोगों को भेजा था, मैं फिर से भेज दूंगा। आप लोग उसे सब्सक्राइब करें और चैनल्स में जो भी वीडियोस है आप वहां पर देखें, आपको ये सारा कुछ वहां मिलेगा क्योंकि 4 दिन में 4 क्लासेस में सभी कुछ कवर करना ये पॉसिबल नहीं है। ये जो क्लासेस है आपको जस्ट एक ब्रशअप करने के लिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कहाँ से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। सो लेट अस एंड द क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलते हैं। Okay, sir. ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.